जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सो वी वर ऑन द एडवर्स इफेक्ट्स एंड ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, हमने डिस्कस किए थे ड्रग इंटरेक्शंस। इसका मेनली ये होता है कि विटामिन B6 जिसको पेरिटॉक्सिन कहते हैं, यू शुड नॉट गिव दिस ड्रग विद दैट बिकॉज विटामिन B6 इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, राइट। इसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको MAO इनहिबिटर्स के साथ देंगे तो इट मे लीड टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हम इसके क्लिनिकल यूजेस में आते हैं। लीवोडोपा बेसिकली क्या कर रहा है कि इट डिक्रीजेस कौन से साइन सिम्टम्स को कम करेगा। हमने पहले डिस्कस किया कि इट्स नॉट द क्योर ऑफ पार्किंसंस, इट डिक्रीजेस द रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड अदर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म। ठीक है, and especially the combo of levodopa with carbidopa. Now we move on to the COMT inhibitors, जिसका हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि what is the rationale for the use of levodopa with COMT inhibitor. So you should know कि what is basically COMT, right? COMT is an enzyme, catechol O methyl transferase, which is also responsible for methylation और metabolism of levodopa. ठीक है, ये बनाता है फर्दर levodopa को कन्वर्ट करता है 3-or methyl डोपा में। ठीक है, विच इज़ अ माइनर पाथवे फॉर लीवोडोपा मेटाबॉलिज्म। मेजर पाथवे क्या है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। माइनर पाथवे क्या है? बाय कॉम्ट। ठीक है, एंड इन इमीडिएट इसका प्रिकर्सर जो आगे बनता है प्रोडक्ट दैट इज 3-O मिथाइल डोपा। लेकिन होता ये कि ये जो 3-O मिथाइल डोपा ये फर्दर कम्पीट करता है, ठीक है, with the levodopa for active transport into CNS। तो इसका अपना ही मेटाबोलाइट अगर जो है वो लीवोडोपा के साथ compete करेगा तो वो लीवोडोपा की ऑब्वियसली एंट्री into the CNS को कम करेगा। So we should give COMT inhibitors along with levodopa as well to increase the further entry of levodopa into the CNS, as I will show you a diagram. So this is COMT inhibitors and entacapone and tolcapone। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर इनहिबिट कर दें हम COMT एंजाइम को by these two drugs, there is decreased plasma concentration of the metabolite which is 3-O methyl dopa। ठीक है, ज़्यादा अपटेक होगी लीवोडोपा की CNS के अंदर। ठीक है, क्योंकि उससे कोई इनहिबिट नहीं कर सकेगा। डोपामिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन में भी ज़्यादा पहुंचेगी एंड इट रिड्यूसेस द वेयरिंग ऑफ फिनोमेना। ठीक है, वेयरिंग ऑफ फिनोमेना हमने पढ़ा था जिसे हम कहते हैं एंड डोज इफेक्ट, कि जब हम लीवोडोपा की डोज देते हैं तो उसकी जब इफेक्ट वेयर ऑफ करना शुरू करते हैं तो मोटर फ्लक्चुएशंस आती हैं। ठीक है, उनको उसके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होती है। सो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इट इज़ not influenced by food as in case of levodopa. Tolcapone, it penetrates blood-brain barrier and inhibits COMT in the CNS as well. ठीक है, and it has a longer duration of action as compared to entacapone. It's a diagram. I hope you are able to see in A what is happening in A when you are giving levodopa. It is converted into the dopa in the CNS, right? So there are two steps. There is a COMT enzyme which is causing the metabolism of levodopa and converting into 3-O methyl dopa, which further inhibits the levodopa entry into the CNS। ठीक है, तो अगर हम दे देंगे 3-O methyl dopa inhibitors यानी COMT inhibitors, बेसिकली तो 3-O methyl dopa नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी लीवोडोपा CNS तक पहुंचेगी। दूसरी बात ये कि हमने डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं कार्बिडोपा से। सो दिस इज शोइंग कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग लीवोडोपा with carbidopa and COMT inhibitors, so thus increasing more entry of the levodopa into the CNS। ठीक है, तो MAO inhibitors हमने पहले भी पढ़ा था कि there are two types। तो मेनली जो हम इसमें डिस्कस करें that is MAO type B which is responsible for metabolizing dopamine, and type A which is responsible for causing norepinephrine and serotonin। अभी हमने जैसे अगर पढ़ी थी एंटी डिप्रेसेंट्स, उसके अंदर हमारा यूज़ होता है टाइप A। ठीक है, MAO टाइप A इनहिबिटर्स। MAO-B इनहिबिटर्स में आपकी ड्रग्स हैं सेलेजुलिन एंड वेसेजुलिन। ठीक है, एंड बच्चों the classification for the drugs for Parkinsonism is very important। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसी तरह करना है, drugs affecting the dopaminergic system and drug affecting the cholinergic system।
Okay, so this is the how dopamine is basically metabolized through MAO-B as well, and selegiline is the drug which inhibits the metabolism of dopamine by inhibiting the MAO-B and thus increasing the level of dopamine. Then we have bromocriptine which is a dopamine receptor agonist. ठीक है, और इसका क्या है कि this dose is increased gradually during a period of 2 to 3 months. ठीक है, and it's basically bromocriptine is a ergo derivative. अगर जब आपने ANS में पढ़ा था तो हमने इसको थोड़ा सा टच किया था ब्रोमोक्रिप्टीन को भी. ठीक है, इसके एक्शंस जो हैं they are similar to that of levodopa. Except कि hallucination, confusion, delirium, nausea, orthostatic hypotension are more common with this bromocriptine since it's a dopamine receptor agonist. It is also increasing the level of dopamine. तो इसकी वजह से ये सारे effects आते हैं. Whereas जो dyskinesias हैं वो less prominent है with bromocriptine and which are more seen with prolonged use of levodopa. ठीक है. पेशेंट पार्किंसनिज्म का प्रेजेंट करेगा ब्रेडिकाइनेजिया के साथ, लेकिन जब आप उसको लीवोडोपा ज़्यादा देर तक देना शुरू हो जाएंगे तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्काइनेजियास. ठीक है, सो ब्रोमोक्रिप्टीन इज लाइक लीवोडोपा कि साइकेट्रिक इलनेस को वर्स करती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स को वर्स करती है, वेजोस्पैज्म को वर्स करती है, पेप्टिक अल्सर, and it may cause pulmonary and retroperitoneal fibrosis. And another adverse effect is it causes erythromelalgia, okay, which is the redness of the swelling and redness of the feet, and that is because of its ergot containing property. So you have to memorize one important point about bromocriptine. It's an ergot derivative और adverse effect क्या है, erythromelalgia. ठीक है, और बाकी pulmonary infiltrates भी हैं और it is more like levodopa. ठीक. So these are basically we have already discussed the pathophysiology of Parkinson's, the classification, the detail about levodopa, dopa decarboxylase inhibitors, COMT inhibitors, and other dopamine agonists. So if you are done with the classification, you can write the mechanism of action of each drug as well. So this is the checklist which I always tell you कि आप अपनी जो मिनी कैचिंग है, जो ट्रेवर भी कहते हैं, उसके एंड में हर चैप्टर के एंड में चेक लिस्ट दी होती है, वो प्लीज़ देखा करें क्योंकि आपके जो पेपर्स बनते हैं हम इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं. ठीक है, और आपके चैप्टर के एंड में जो MCQs भी होते हैं वो भी देखा करो. ठीक, तो चेकलिस्ट में है इसमें what is it? Describe the neurochemical imbalance between underlying symptoms of Parkinson's. Obviously, it's more of pathophysiology, but you should know that. Then identify the mechanisms by which levodopa, dopamine agonists, selegiline, and muscarinic blocking drugs alleviate Parkinsonism. So this is important कि हर drug का क्या mechanism है in treating Parkinsonism. ठीक. Then we have described therapeutic and toxic effects of major anti-Parkinsonism agents. तो यानी कि हर drug का आपको clinical use और toxic effect आना चाहिए. Then we have identify the compounds that inhibit dopa decarboxylase and COMT and describe their use in Parkinsonism. So you are now well aware of the names of the drugs and the rationale for the use in Parkinsonism. ठीक. And the last checklist question is identify the chemical agents and drugs that cause Parkinsonism symptoms. Chemical agents में हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें दिखाया हुआ था कि not only age related but some trauma, some toxins, they all can cause Parkinsonism symptoms. But there are some drugs which also cause Parkinsonism. So आपने अभी तक जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स पढ़े होंगे या और कोई ड्रग्स पढ़ी होंगी, इसमें हम कहते हैं कि दे कॉज ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, लाइक वी से कि एक्स्ट्रा पेरिमेटल साइड इफेक्ट्स हैं. ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू नो 2 to 3 ड्रग्स which cause these drug induced effects. Okay, we have few MCQs as well. Again, these are taken from your mini catching because paper बनता है catching से. And entacapone may be of value in patients being treated with levodopa, carbidopa because it, what does it do? It activates COMT, decreases the formation of CO-methyl dopa, inhibits monoamine oxidase type B, inhibits neuronal reuptake of dopamine, and releases dopamine from nerve endings.
So this is basically you are the one who are going to answer this question. I already know the answer. And do not open the mini catching, but if you want to brainstorm a little, first do it and then check your answer from the book. So if you have any queries, if you don't understand the question, you can ask or you can write in the comments, but it's more of you to answer the question. Then we have which of the following drug is most suitable for management of tremor in a patient who has pulmonary disease. तो इसमें भी देख लो कि ट्रेमर्स हैं, ठीक है, पेशेंट को उसको पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है, तो हमने क्या देना है बेसिकली इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दी हुई हैं, बीटा एगनिस्ट भी लिखे हुए हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी। पहली बात तो कि पल्मोनरी डिजीज़ है तो बीटा ब्लॉकर्स तो नहीं देते, लेकिन ट्रेमर्स में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। सो यू कैन गिव सम बीटा ब्लॉकर विच डज नॉट इफेक्ट द यू कैन से कि पल्मोनरी डिजीज़। तो आप इस पे देख लो क्या दे सकते हो, कार्डियो सेलेक्टिव अगर देना चाहो तो। आई होप यू नो द आंसर नाउ। Okay, next is regarding the anticipated actions of levodopa, the patient would not be informed that, ठीक है, क्या चीज़ उसको नहीं होगी। A net like reddish bluish discoloration of skin is a possible side effect. Dizziness may occur. You should take the drug in divided doses to avoid nausea. The drug will probably improve his symptoms for a period of time but not indefinitely. Uncontrollable muscle jerks may occur. तो पहली बात तो ये कि हमने अभी तक इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कोई रेडिश ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं पड़ी, ठीक है, इसको तो रूल आउट करो, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही है, लेकिन बाकियों को भी देखते हैं। डिजीनेस अकर्स ऑन स्टैंडिंग अप, जी हाँ, हाइपोटेंशन की वजह से। एंड ही शुड टेक द ड्रग इन डिवाइडेड डोजेस। इससे कहते हैं कि जो आपका नोजिया वॉमिटिंग होता है इट इज़ रिड्यूस इफ़ यू टेक द ड्रग इन इंटरवल्स, ठीक है। और ड्रग का ज़ाहिर बात है इम्प्रूव हो जाते हैं सिम्टम्स for a period of time, लेकिन it does not cure the disease. And prolonged use of the drug may cause muscle jerks. So the answer is A. And you have to find out कि कौन सी drug है Parkinsonism की which causes a net like reddish discoloration, ठीक है। Then we have another question which is a 51-year-old patient with Parkinsonism, levodopa की therapy मिल रही थी with adjunct use of low dose of entacapone as well, but continues to have off periods of akinesia. On period है which is improved mobility, and off period है जिसमें mobility उसकी नहीं है, ठीक है। The most appropriate drug to rescue the patient but that will only provide temporary relief is, ठीक है, एपोमॉर्फिन है, बेंस्ट्रोपीन है, कार्बिडोपा है, रोपिनरोल है या सेलेजुलिन है। To rescue the patient from the off period. So I told you in the initial lecture के off period को control करने के लिए, treat करने के लिए which drug is the choice, ठीक है। तो ये आपने इसको आंसर करना है and you can check your answer from the mini casing chapter end. And okay, there is another scenario in which there are all mentioned all the signs symptoms of Parkinson's disease. You can be asked in this way in your exam as well. एंड आई होप आपको समझ आ गई है। जिसको समझ नहीं आई यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और आस्क मी एनी टाइम। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट opioids from the next lecture, and before that there will be also lecture on the movement disorders, and as I told you in the class we'll be having an assessment on short essay questions related to this topic. Bye bye, picture.